अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों को जिस चीज़ का रिव्यू देने जा रही हूँ वो है एसेंशियल हेयर ऑयल। आई हैव दिस वन। दिस इज़ सनफेयर, आई थिंक सनफेयर ही इसको प्रोनाउंस करेंगे, एंड इट्स ब्राज़ील लाइफ फ्रूट हेयर केयर एसेंशियल ऑयल। बिकॉज हेयर ऑयल हर जगह और सब लोग लगाना ज़रूरी नहीं समझते, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हेयर को डैमेज से बचाती है। एक्चुअली एसेंशियल ऑयल्स का इसलिए ज़रूरी है बालों के लिए क्योंकि ये बालों की खुराक है। हमारे हेयर को बहुत सी हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हम लोगों की हेयर केयर अच्छी होनी चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें सूट कर रही है और कौन सी चीज़ नहीं कर रही सूट। सो उसके लिए we need to take care of our hair and we need to look after them, and we need to know that if we are taking something, is it suitable or not. Same as in the case with the hair oil, essential hair oil. If you don't want to use other oils, like we have few other oils like coconut oil, almond oil, and many more oils. तो अगर हम उन ऑयल्स को यूज़ नहीं करना चाहते, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल, और भी काफ़ी सारे जो तेल हैं, अगर हम उनको लगाएंगे तो हम लोग चिप सा फील करते हैं बालों में, या फिर वी डोंट फील गुड, एंड वो लगा के हम कहीं जा भी नहीं सकते. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव टू अटेंड सम पार्टी और सम गैदरिंग और समथिंग लाइक दैट, वी कैन जस्ट यूज़ दोज ऑयल्स. सो these oils can be used even if we are not going anywhere, and even if we are having some kind of gathering party or anything like that. So essential oils का benefits ये हैं, एक तो ये हेयर को डैमेज से बचाते हैं, दूसरा ये सनलाइट के डैमेजेस से भी उसको बचाते हैं, थर्ड इफ़ यू वाना ब्लो ड्राई योर हेयर और इफ़ यू वाना मेक देम सम stylish with your colors, with your अदर थिंग्स जो आप बालों पे यूज़ कर सकते हैं, जिनसे आप बालों के डिफरेंट स्टाइल्स बना सकते हैं, बालों को जिससे बालों को हीट मिलती है, तो वो चीज़ें बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, एंड उससे हमारे बाल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी, ड्राई, रफ हो जाते हैं. मतलब if you have natural silky hair and if you don't take care of your hair, तो उससे ये होगा कि आपके बाल ऐसा रफ हो जाएंगे, एंड within no time आप देखेंगे कि आपके बालों की हालत ख़राब हो गई. एंड if you want to make your hair glow, and if you want to make your hair beautiful in length and also silky, shiny, you need to use any essential oil you have. But that should be a good one, huh? So for that you need to research on the oils, and after that you have to use those oils especially before doing anything जो आपके बालों को हीट देता है, कोई भी स्टाइलर, कोई भी कलर या ब्लो ड्राई, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए आपको सबसे पहले एसेंशियल ऑयल यूज़ करना है. सो आई हैव दिस वन. अभी जिसका मैं रिव्यू करूँगी, it's sunflower Brazil live fruit, and let's unpack. This is how it looks from inside. This one is the box and this is the bottle. Actually I have used it, so इतना रह गया है. So this hair oil is actually good, लेकिन अगर इसको हम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में we need to take few drops, like 1 or 2 drop, और उसको अपने बालों में अप्लाई करना है. आप बालों में इनको अप्लाई एसेंशियल ऑयल को कब कर सकते हैं?
um, if you want to make your hair healthy, beautiful, strong and shiny, तो उसके लिए भी you have to use it before going to bed. If you want to use it, take a few drops, 1 or 2 drop in your hand, and इसको अपने बालों या थोड़ी सी स्कैल्प पे लगाएं and leave it for a night. दूसरी चीज़ ये कि when you take bath or shower एंड आपके बाल थोड़े थोड़े गीले होंगे, उनको थोड़ा सा टॉवल से ड्राई करें, और जब वो हल्के हल्के से गीले रह जाएंगे उनमें टेक 1 or 2 drops, रब इन योर हैंड एंड अप्लाई इट ऑन योर हेयर. उसके बाद लीव देम, या ब्लो ड्राई करना है तो वो भी कर लें, और उसके बाद आपके बाल ख़राब नहीं होंगे. थर्ड, अगर इफ़ यू वाना गो आउट एंड यू वाना मेक एनी हेयर स्टाइल विद कर्लर या फिर बाकी किसी भी चीज़ के साथ आपने स्टाइल बनाना है, तो उसके लिए भी आप इसको पहले अप्लाई करेंगे 1 or 2 ड्रॉप्स. एंड देखिए स्मूथली अप्लाई करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दें तो ऐसे लगेगा ग्रीसी सा या कुछ भी. तो बहुत ही हल्के वे में इसको अप्लाई करें एंड देन जस्ट डू वट एवर यू वांट टू डू विद योर हेयर. उसके बाद अगर आप बाहर जाना चाहते हैं बाल खोल के, और सनलाइट बहुत ज़्यादा है गर्मियों में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इफ़ यू आर नॉट इवन यूजिंग एनी स्टाइलर, तो आप इसको अप्लाई करेंगे अपने बालों में 1 or 2 drops, और एनी अदर हेयर एसेंशियल सीरम यू हैव, योर कोई भी एसेंशियल ऑयल, तो उसको अप्लाई करेंगे बालों में एंड देन यू कैन गो आउट. वो ये आपके बालों को डिफरेंट सनलाइट की रेज से बचा सेव करता है, हीट से सेव करता है, और बहुत से डैमेजेस से भी सेव करता है, टू मेक देम ब्यूटीफुल, shiny, healthy, and it makes you look more beautiful. Trust me, you need to buy any essential oil you want for your hair. And alright, let's open it. Okay. Oops. ज़्यादा ही आ गया. So this is how it looks like. You can see the consistency. It's oily and it's not greasy. Now what you have to do is take these drops in your hand, rub in your hand, and apply on your wet hair, or apply on your hair before styling your hair to make them look more beautiful. It smells really good. I love this smell. I hope you like this video. Give me a like, comment, subscribe my channel, and please share it